Hey, hi everyone. Thank you so much for joining on a Sunday, 9 p.m. I understand you guys have better plans and better things to do. But thank you for listening to four people talk about IPOs which are coming, and it's been, I understand कि अभी IPOs काफी ज़्यादा hot हैं, so it's something which is almost everybody is tracking, and there are a lot of new people who have also started joining these sessions, and I'm sure यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो first time join कर रहे हैं. So उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि make sure you kind of listen the whole company, and make sure that you also not just go by what our read is, also read the DRHP yourself. आप अपने से DRHP पढ़ें, अपने से इंटरव्यू देखें प्रमोटर्स के, एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लें. This our read is essentially what we feel about the company. हम गलत हो सकते हैं, we can definitely be wrong, so definitely want to highlight that as a concern. So please don't take that as a पॉइंटर. वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड. एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है. सो डेफिनेटली डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड डू लाइक वॉट एवर वी से इज नॉट अ बाय, not a apply or a not apply recommendation. It's just four friends talking about the companies that are coming into list ourselves. आई अंडरस्टैंड कि अभी जो फोर्थ फ्रेंड है वो मिसिंग है, उसी की हम वेट कर रहे हैं बिफोर वी काइंड ऑफ गेट स्टार्टेड ऑन दिस एंगल. Before we now that we are almost about to start, I just want to set up the agenda once. एक बार मैं agenda set कर देता हूँ कंपनीज के लिए कि हम कैसे बात करेंगे. So सबसे पहले आज हम 6 कंपनियां कवर करने वाले हैं, और उसके एंड में इफ देयर इज इनफ इंटरेस्ट हम बजाज की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की भी बात कर सकते हैं. इफ यू फील आपको बजाज की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करनी है, प्लीज repost this space. Make sure more people join in. It will help us as well. It will just encourage and more people will join in. So just repost this space of ours, and also YouTube channel भी बना हुआ है, वो भी उसको भी आप फॉलो करें. Having said that, let me set up the agenda. हम सबसे पहले वेस्टर्न कैरियर्स और आर्केड, दो मेन बोर्ड इश्यूज हैं. वेस्टर्न कैरियर्स एंड आर्केड डेवलपर्स, उसकी बात करेंगे. उसके बाद एसएमईज पे जाएंगे, एनवायरोटेक की बात करेंगे, डेक्कन ट्रांसफोर की बात करेंगे, सोडानी फिनटेक की बात करेंगे, एंड सोडानी अकेडमी की बात करेंगे, एंड देन पॉपुलर फाउंडेशंस की बात करके फिर फाइनली बजाज लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे. सो दैट्स गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी agenda for the day. With that, maybe we can get started. Over to you to start with. Maybe we start with Western Carriers. So let me set it up. So Western Carriers is a 492 CR IPO. Mainboard का IPO है जो next week आ रहा है. Around 400 CR is fresh issue. 92 CR OFS है. जो कंपनी है वो मल्टी मॉडल रेल फोकस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी है, एसेट लाइट कंपनी है. So maybe Rohit, do you want to go ahead and talk about Western Carriers first? Yes, thanks, Manish. So as Manish has set it up, Western Carriers, they provide multimodal logistics solutions. So this is across road, railway, water, and air logistics, along with a suite of value-added services. People who remember, who also track SMEs, would have seen a very chota IPO come, rapid multimodal, which was not truly multimodal. This is actually the sort of the real multimodal logistics provider. They are a 4PL provider, which is basically they manage the entire supply chain. They will partner with, third-party logistics. They will handle whatever the strategy that the client needs to do. They will ensure that, from start to end, they are the single point of contact. So that is the difference between, say, a typical third party who will just manage the actual movement of goods versus a fourth party that tends to be one level above this and looks at things at a more strategic and at a sort of end-to-end level. These guys are one of the largest in India in terms of, in fact, I think they are the largest private player by container volume in India, and they handle almost 6% of domestic volumes. Even though they say they are asset light, they do also own some assets. They have a few hundred containers, some heavy commercial vehicles. They have some other sort of very specific equipment, which they say is needed because some of the general third-party providers that they may use do not have the special capability that they need. And in fact, some of the funds that they're raising is also to increase their asset base and add some more of the specialized equipment.
Their focus sector is mainly in metals. That makes up over 50% of their biz, and that is a very cyclical industry. So that is something to keep in mind. And they will be affected by how the sector does. But they have, very, very solid clients across spectrum. Tata Steel, Hindalco, Jindal. So probably the top metal, steel and metal names that you would know. Plus the biggies, the Alevers, Coca-Cola, Tata Consumer. So their client base is also excellent. And one interesting thing is their retention rate with their top customers is almost 100%. And most of the revenue comes from repeat revenue. I think in 24, almost 80% of the revenue came from customers who have been working with them for over 3 years. Apart from raising funds for capex, they're also clearing out some debt, about 160 crore of debt, which will halve their debt on books. Already their debt is not very high, and this will halve that debt and add straight, 12, 13 crore to the bottom line. Now the concerns here are mainly that firstly, the financials are very weak. They've only grown around 4% year on year for the last 3 years, which today that's about 1,700 crore in revenue. But while there have been recent headwinds, especially with the whole Middle East issue, it doesn't explain why for 3 years in a row they've not been able to grow their top line. They have grown volumes a bit more than this number, but still it's much lesser than other logistics peers in the market. The balance sheet also looks pretty stressed. If you see this year, the receivables have really shot up. It's almost, I think, 4 months of receivable days, which is very high for this segment. And it again kind of shows that their numbers are not quite stacking up. The other concern that I had was just around the promoter group. There are a lot of, there's a lot of news floating around. There's a feud between the promoters, the main promoter, Rajendra Sethia, and his brother, Narendra Sethia. He was supposed to furnish a lot of information and he did none of that. Then he's also filed some stuff afterwards saying that this whole IPO is not correct. It's fraud and so on. I mean, that's just a he said, she said, but I'm just letting you guys know. The promoters also draw a very strange compensation structure, which is tied to the PAT percentage. And because of that, their overall compensation is a very large percentage of today at least, it is a very large percentage of the PAT itself, which is not very high. And I think they also were promoters or directors of a company that got delisted or actually suspended from trading in the Calcutta Stock Exchange. So there's some general questions around the promoter group that I couldn't get, great comfort on. Having said that, this company is coming very cheap. It's coming at a FY24 PE of just 21. If you sort of forward that for FY25, it's coming at around a 16 PE, which is way cheaper than peers. Most mainboard logistics peers trade at 30 to 40 PE. I think these guys filed their DRHP almost a year ago. They've just managed to sort of sneak it in. I mean, file their RHP like almost a year later, literally with like 4-5 days to go. And if I'm not mistaken, they were expected to come out with a far larger raise at a far higher market cap when they filed the DRHP. So again, it's not clear to me exactly what has happened in between. But again, all of these are adding little red flags to me, at least with the information that we have. The anchor book was actually decent with good mutual funds and some FIIs also. So overall, there's like a mix of stuff. I generally don't like no growth businesses or business that grow 3-4%. It's not very exciting, but they've also priced themselves very well. But on the other side, again, you have the promoter group sort of red flags and the whole RHP, DRHP sort of red flags. So overall, I'm pretty neutral, given that there are so many other issues. I don't personally plan to apply for this one, but you guys can study this issue. And if you have better answers than I have on some of these, you guys can consider applying for this. But this is my take on this company. Got it. Perfect. Very, very well covered. जितना मैं भी देख रहा हूँ कि कंपनी के थोड़े बहुत ये बातें चल रही हैं, कंपनी ने अपना डीआरएचपी ऑलमोस्ट 1 साल पहले फाइल किया था और आरएचपी ऑलमोस्ट जस्ट 5 दिन खत्म होने वाले हैं, उससे पहले फाइल किया है और थोड़ा बहुत लिटिगेशन वगैरह इश्यूज है, फैमिली इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं. बट हैविंग सेड दैट, मैंने कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह के बारे में पढ़ा नहीं था, सो थैंक यू सो मच रोहित फॉर कवरिंग दैट. तन्मय, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन वेस्टर्न कैरियर्स? Tanmay, can you hear me? Rohit and Yash, can you guys hear me? No, I can't hear me. Still on mute. But you can hear me, right? At least. Right? I can hear you. I can hear you. Yes. Got it. हाँ. So that's a good relief, right? कि last time जैसे नहीं हुआ जहाँ पे
मैं ही बाहर हो गया हूँ स्पेस से. बट या लेट्स जस्ट वेट फॉर तन्मय टू कम बैक. आई थिंक हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? यस आ रहा है सर. बताएं. हाँ, क्या आर्केड की बात करनी थी क्या? मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, अभी डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन वेस्टर्न और वी कैन गो टू आर्किड. सर वेस्टर्न में तो बात ऐसा है ना कि मतलब मेरा तो एक होता है कि मेरे को पहले बंदा लगता है, फिर मैं धंधे की बात करता हूँ। मेरे को बंदा पसंद नहीं आया, ऑनेस्टली एकदम सच बोलूंगा। वो मेरे को बहुत ज्यादा इश्यूज लगे उसमें, मतलब कुछ भी लिटिगेशन है, उनका नॉन कम्पीट का एग्रीमेंट है, फैमिलीज में इश्यूज है। और सर मेरा ना एक ही चीज समझना है कि इसको 22 सितंबर को सेबी नोड में अप्रूवल के लिए 23 तारीख को लिस्टिंग करा रहे। इसका यूज 1050 करोड़ का था, अभी 490 हो गया। तो और प्राइसिंग भी आधी हो गई है, मतलब ये पहले आईपीओ 370 पे आने वाला था, अभी 170 पे आ रहा है। तो मतलब कुछ तो है ना, इसलिए आधा आ रहा है। तो मतलब मेरे को पर्सनली ये गलत लग रहा है थोड़ा इशू। तो मैं तो इसको मतलब बियॉन्ड द लिस्टिंग पॉइंट वो भी मेरे को ज्यादा दिखता नहीं, लिस्टिंग भी इसका बहुत नॉर्मल एवरेज लिस्टिंग दिखता है। उसके बियॉन्ड में देख ही नहीं रहा इस आईपीओ को, इग्नोर कर रहा हूँ कम्प्लीटली। Got it. Okay. So that's our read of Western carriers. हम अभी तक Western carriers की बात कर रहे थे. Maybe we will now move forward to the second main board issue. Second main board issue की बात करते हैं जो कि है Arcade Developers. Just in the interest of everyone who has joined us for the first time, we review all the companies and we put this on YouTube as well. So if you haven't seen it, मैंने ऊपर पिंट कमेंट डाल रखा है, उसमें आप जाके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं. उसमें हमने एक मैनेजमेंट पैरामाउंट फॉर्जिंग से बात भी की है जो नेक्स्ट वीक आईपीओ आ रहा है जिनका. सो इफ यू वांट यू कैन लिसन टू द मैनेजमेंट एंड गेट मेक अ व्यू ऑन दैट एज वेल. हैविंग सेड दैट, कल जो हम स्पेस करेंगे उसमें पैरामाउंट फॉर्जिंग्स और जो बाकी आईपीओ बच रहे हैं उनको कवर करेंगे, इंक्लूडिंग नदन आर्क. आई अंडरस्टैंड नदन आर्क जो मेन बोर्ड आईपीओ है उसमें काफी इंटरेस्ट है. जीएमपी हैज बीन गोइंग ऑल ओवर द प्लेसेस, so उसकी भी कल बात करेंगे. सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल फोर ऑफ अस. Having said that, let me set up Arcade Developers. So Arcade Developers is a very small, tiny issue, around 410 crore issue on Mainboard. It's all fresh. The company is a real estate developer based out of Bombay. दोनों काम करती है कंपनी. Around 66% वर्क जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स का है, 33% रीडेवलपमेंट का है फ्रॉम द पास्ट years that it has done, and it's a very decent player. मैं देख रहा था इनके कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आर्केड नेस्ट, आर्केड एस्पायर, आर्केड प्राइम, आर्केड ऑरा. सो इनने काफी अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है, पिछले 20 साल से कर रहे हैं काम. सो मे बी तन्मय, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट आर्केड? यस सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है एकदम? यस. So Arcade Developers is a Mumbai-based real estate developer, and it also does redevelopments. So this company is raising 410 crores. Note that 20 crore has already been raised as a pre-IPO placement. So total इनका size net debt में 430 crore पड़ेगा. तो 250 crore they are spending towards funding their 3 ongoing projects, and they are earmarking 180 crores towards funding land acquisitions for future developments and GCP. तो इन्होंने सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये कंपनी पार्टनरशिप से जब से लिमिटेड में कन्वर्ट हुई है, इन्होंने 28 प्रोजेक्ट्स करे ओके आज तक, और अभी इनका 10 है अंडर पाइपलाइन. उसमें से 2 इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट करे लास्ट क्वार्टर में, 2 इस साल कंप्लीट होंगे, और जो 6 है वो अगले साल एंड तक होने चाहिए. सो इसमें मेरे को सबसे पहले कंपनी में एक अच्छी बात ऐसी लगी कि ये डेट फ्री है, मतलब इसमें एक्सटर्नल डेट है ही नहीं. वो जो भी डेट दिख रहा है वो प्रमोटर डेट है, और वो ठीक है. मतलब बहुत रेयरली होता है कि कोई रियल एस्टेट कंपनी है इतने अच्छे पैसे भी ग्रो कर रही है और डेट भी नहीं. तो इसने इसका रेवेन्यू मिक्स बताता हूँ मैं. तो दे आर डूइंग न्यू प्रोजेक्ट 67% एंड रीडेवलपमेंट 33%, विच इज अ हेल्दी मिक्स. मतलब इसका अगर कोई पीयर कंपेटिटर में करने जाऊँ तो ऑनेस्टली बैठता ही नहीं, क्योंकि जो इसके पीयर्स है एक तो बहुत बड़े लेवल के हैं, और एक छोटे में सूरज है, बट दैट इज अ प्योर प्लेयर रीडेवलपमेंट कंपनी. और ना मैं एक चीज बताऊंगा कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें मार्जिन आर एक्चुअली हायर, मतलब अराउंड अराउंड 23% के आसपास के नेट मार्जिन आफ्टर टैक्स मार्जिन होते हैं. और जो रीडेवलपमेंट होते हैं उसमें अब बिट कम होते हैं, 16-17% अराउंड मार्जिन होते हैं. बट दोनों में फर्क ऐसा है, रीडेवलपमेंट में आपके कैश फ्लोज बहुत हेल्दी होते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा कैश फ्लो में इश्यूज होता है. सो दिस कंपनी इज इन अ हेल्दी ब्लेंड ऑफ बोथ, मतलब इनका कैश फ्लो भी सही है, और पैट मार्जिन भी आई थिंक इनका 19.5% उनका पैट मार्जिन है. तो इन्होंने FY23 में रेवेन्यू करा 220 करोड़ एंड पैट के 51 करोड़. इसका FY24 में रेवेन्यू 2.5 गुना हो गया, 635 करोड़, और पैट 123 करोड़. तो मैंने जब ये देखा ना, आई वाज लाइक भाई, इज दिस रेवेन्यू ग्रोथ मतलब ये सस्टेनेबल है, यहाँ से बाद में नीचे आ जाएगा? तो आई जस्ट सॉ कि उनका जो रेवेन्यू अकाउंटिंग का जो क्राइटेरिया, दैट इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मेथड.
इनका जब 25% से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो ये होता है ना कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं होता है, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पिछले साल इनके 3 प्रोजेक्ट ऐसे थे, उसमें से एक 22% पे था, एक 18% पे था, एक 17% पे था। तो उसकी वजह से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया ड्यू टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आप उसको अगर मैच करके देखो तो इनका रेवेन्यू बहुत अच्छे दर से, आई थिंक 45% की सीएजीआर से ग्रो कर रहा है पिछले 3 साल से। तो ये कंपनी का जो फ्यूचर पाइपलाइन है ना हेल्दी है बहुत, और इनको जो अगले 6 प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी उसमें टोटल 567 यूनिट्स है। ओके, अगले जो 1.5 साल में कमेंस होंगे। बट इसमें से एक चीज देखने वाली बात ऐसी कि 75% ऑफ द स्टॉक इज ऑलरेडी सोल्ड। मतलब इन्वेंट्री का कंसर्न मेरे को इस कंपनी में ना के बराबर दिख रहा है। और इसका जो रेवेन्यू विजिबिलिटी आता है ना कि 2.2 करोड़ में पर फ्लैट पकड़ो, एवरेज जो इनका पिछले साल था इट वॉज 2 करोड़ 5 लैक्स। आई थिंक ये 2.25 करोड़ तक चले जाएगा ये साल। तो उसके हिसाब से इनका रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 2 साल का बनता है 1280 से 1300 करोड़। और ये 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट इज अराउंड 500 करोड़। तो नेट नेट में मैं देखूं तो मुझे अगले 2 से 2.5 साल में 1900 करोड़ का रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है, विच इज एक्सट्रीमली डिसेंट। मतलब दिखता है कि ये 20-25% आराम से ग्रोथ करेगा अगले 2 साल तो मिनिमम। मुझे कंपनी में सबसे 2 चीज अच्छी लगी बहुत। पहले तो इन्होंने वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव रखे हैं, मतलब कोई इसको प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखेगा तो पीयर के साथ ही दिखेगा, एक 5-5.5 के अराउंड ये बुक वैल्यू पे, ये पोस्ट मनी पर 5.5 भी नहीं, 4.8 अराउंड पोस्ट वैल्यू बुक में, पोस्ट मनी बुक वैल्यू है। बट पी लेवल पे सिर्फ 19 टाइम्स पे है, 19x पे। तो और इसमें और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, मुझे इनके प्रमोटर बहुत अच्छे लगे। मतलब बहुत दिनों बाद एक मेरे को इतना जेन्युइन और ऑनेस्ट प्रमोटर दिखा। मतलब ये कंपनी प्रमोटर पे बेट लेने लायक भी है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट प्रमोटर है, बात इतने अच्छे से नहीं कर पाता बट काम बहुत उसको अच्छे से समझ में आता है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये 1.5 साल में आराम से दुगना हो जाएगा स्टॉक। इसको बड़े लिस्टिंग लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक है। Got it. Thank you so much, Tanmay, for covering the read. मेरे एक दो questions है इस पे, मैंने भी पहले you know that I was going to cover this company, right? So I had done some research on it. I wanted to check with you. My read is almost all similar as well. I was looking, जो 6 नए प्रोजेक्ट हैं उनमें से 5 रीडेवलपमेंट है और एक completely न्यू प्रोजेक्ट है. आई थिंक What सर do you तीन think? तीन है, तीन है, 3 रीडेवलपमेंट है, 3 नए, और जो 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ये दोनों नए। तो उनका जो मार्जिन है, प्रोफाइल है ना, एक हल्का सा आई थिंक 50 to 100 बेसिस पॉइंट नीचे आएगा। बट ड्यू टू द रेवेन्यू ग्रोथ वो कवर अप हो जाएगा, ये वहां से भी अच्छा ग्रोथ कर लेंगे। Got it. और मार्जिन प्रोफाइल किसमें ज्यादा होता है? रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ज्यादा सर होता न्यू है न्यू कि? प्रोजेक्ट में सर न्यू प्रोजेक्ट में अराउंड 22% का आफ्टर टैक्स मार्जिन है, और रिडेवलपमेंट में अराउंड 17% है। बट द थिंग इज आपका रिडेवलपमेंट में कैश फ्लो बहुत हेल्दी होता है। तो दिस कंपनी क्या कर रहा है, ये कंपनी दोनों का इक्विलिब्रियम रख रहा है। और ये कंपनी ने एक ऐसा बताया भी है मैनेजमेंट इंटरव्यू में कि हम 2 साल में 50-50 पे आ जाएंगे। मतलब मार्जिन ऐसे हल्का सा आई थिंक 100 से 150 बेसिस पॉइंट डेंट करेगा, मतलब 18.5% पे आ जाएगा फ्यूचर में। बट इनका कैश फ्लो कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब ये फ्यूचर में और अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे, वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस हो जाएगा ये। बट सर फिर भी इंडस्ट्री से फार सुपीरियर इनके मार्जिन से जो इनसे कम्पीट कर पा रहे हैं। तो मतलब अच्छी कंपनी है और बहुत सारे पैरामीटर्स पे बैठता है, वैल्यूएशन सस्ता रखा है। प्रमोटर तो मेरे को बहुत पसंद है, मैं प्रमोटर पे ज्यादा ऑनेस्टली बेट लेना चाहता हूँ। तो ठीक लगी मुझे कंपनी। और एंकर बुक ठीक है, लोगों देखो ये एंकर बुक है ना, लोगों को समझेगी नहीं, थोड़ी सी अलग काइंड ऑफ एंकर बुक है, बट ठीक है, अच्छी एंकर बुक है। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे एंकर बुक पे ही था. इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी है चैट में कि व्हाट इज द राजस्थान ग्लोबल एज वेल एज सोसाइटी जनरल लिंक. देयर इज नो लिंक टू इट. आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई. शायद मैंने या रोहित ने एक ट्वीट डाला था. इट्स जस्ट दैट दीज टू नेम्स आर इन दैट एंकर बुक. एंड राजस्थान ग्लोबल यूजुअली एसएमईज में आता है. सोसाइटी जनरल इज एफआईआई, big name. So both of them are together sharing the anchor book. So no, nothing, no link between them or anything uh, in any way bad. But Tanmay, any other name which caught your attention? Or I understand it's a very small book, anchor book, right? So maybe with that we can cover and close एक arcade and नाम था move यार, on. एक नाम मुझे बहुत पसंद आया, बट ठीक है, आप जानते हो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मुझे पता है क्या कह रहे हो, but ठीक है. With that, maybe we can cover and close arcade. मेरे हिसाब से भी मैं अपनी प्रायोरिटी बता देता हूँ. So arcade in itself is a smaller size issue. तो arcade में allotment काफी टफ रहेगा मेरे हिसाब से. It's a 410 CR issue and already कंपनी का GMP has been flying. So but फिर भी मैं arcade ट्राई करूंगा. और उसके अलावा कल हम जब डिस्कस करेंगे so we'll probably look at either नदन आर्क करना है कि वेस्टर्न कैरियर्स करना है. बट वेस्टर्न कैरियर्स ऑन फेस
seems a slightly dubious issue और उसको सिर्फ listing gain पे ही target करूंगा अगर मैंने किया भी. So that's my view. Rohit and Yash, do you guys? Yash, I understand you don't apply IPO, so not a question for you. But Rohit, what are you planning to do? Yeah, I too will be focusing on Northern Arc, Arcade, and some of the SMEs that are coming. Got it. So that was our read with respect to the Mainboard IPOs. हमने सबसे पहले Western Carriers and उसके बाद Arcade Developers की बात की. अब हम एक और बार SMEs की तरफ चलते हैं. 4 SME कवर करने वाले हैं. So सबसे पहले जो SME की बात करने वाले हैं हम वो है Envirotech करके कंपनी है उसकी बात करेंगे. सो इट्स अ 30 CR इशू. कंपनी जो है वो थोड़ी सी अलग, ऐसी कोई कंपनी मुझे कंपैरेटिवली पीएस में दिखी नहीं. नॉइस मेजरमेंट एंड कंट्रोल सॉल्यूशंस बनाती है सीएनआई इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो यूज होती हैं. सो मे बी रोहित, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट Envirotech does? I understand it's priced very well, so there was some interest there, but do you want to talk through what your read of Envirotech was? Certainly, yeah. So I'll cover Envirotech now. This prima facie is a very interesting and almost looks attractive, barring one giant red flag / question mark, which I'll cover. So this company is a acoustic product manufacturing company. So they do noise measurement and noise control, as Manish was saying, for industrial applications, industrial and commercial applications. They do everything end to end, from researching to the cost benefit analysis, to design, to manufacturing, to installation. So they're like a one-stop shop for something like this. Now, what exactly is this segment of acoustic products? I was just reading a little and try to explain it as simply as I can. And honestly, I did not realize there were so many different applications for noise reduction. But broadly, you can understand it in 3 ways. The first is there are enclosures, which is how you prevent inside noise from going out. So in fact, in many of your buildings, you might have generators which make a lot of noise. Think of something similar at an industrial scale. You have generators, machines, say CNC machines, pumps, and so on that can make a lot of noise, and you want to contain that noise. So that is one type, which is an enclosure. The second is where you want outside noise, where you don't want outside noise to come in. So you're in a controlled environment. Say you need to do sound measurement. Or you want to test the purity of a speaker, or you want to test the sound that an AC or a fan or a fridge makes. So this is where you create a noise booth, which prevents outside noise from coming in, keeps the noise inside, at a minimum. The third type is barriers. So these are noise barriers are basically to reduce noise. So in the first two, you're completely eliminating the noise. And the third one, you're trying to reduce noise in places where you cannot, directly put an entire enclosure over an entire power plant or over say a highway where there is going to be noise, and you use noise barriers, which can be of different types to reduce the noise. Apart from this, there are some other smaller things, but they also make some, things like noise, controlling doors and stuff like that. But this should give you an idea of what, this noise cancellation or this noise acoustic, sort of segment, covers. They make their revenue across this segment. The biggest ones are enclosures, barriers, and doors. Just coming to their financials, their numbers look really, really good. Typically like how some reviewers say it raises eyebrows, and honestly raised my eyebrows also. They went from a 27 crore revenue in 23 to 45 crores last year. They have incredible PAT margins. Again, it has shot up a lot in the last year to almost, I think from 10 odd percent to 24%, which again looks a little hard to believe. But one must remember that this is a very niche industry. There isn't a lot of competition, organized, unorganized. There is when you operate in an industry like this, and this promoter has like 20 years of experience in this space, you do kind of earn the right to better margins too. And the company has justified it, saying that there are many things they've done to improve the margins, and their COGS have improved significantly year on year and so on. And the one thing that I generally look at when I see this kind of improved margins is, does the balance sheet tell the same story? And interestingly, it does. There is no spike in receivables. Their cash flows are solid. In fact, their cash flows are very, very good. So the cash is coming into the company. So it's not like they have, increased revenue to 45 crore and suddenly they're like 5 crore operating, loss in cash flow. So cash flows are always harder to fudge. And so the cash flows in the balance sheet actually looks good here. This company is also coming very, very cheap. It's just coming at 9p. Now, all of that is good, but what is the issue here? So they're basically raising money for, or before that, I'll just say one thing. They are currently operating at 100% capacity utilization.
they are raising money to purchase land for the factory building that they want to set up to increase their capacity. So that's obviously multiple steps away. They've already paid some 8-9 crore for that land, and they need to pay another 12 crore, which is supposed to come from the IPO proceeds. Now, by when this will happen, I don't know. It is not mentioned. Like I said, they're operating 100% capacity utilization. Their utilization went from 80% in FY23 to 100% in FY24, which is a 25% jump, but their revenue jumped 66%. How? I don't know. There's no explanation. If you look at their working capital calculations, they're actually saying that they want to double revenue in FY25. Again, how? I honestly don't know. There is no clarity on this. This is also probably an order book driven business, but there's again no mention of what the order book would be, which somehow I feel that some of these LMs, especially say a Share India, which has been an LM for quite a while, should understand the kind of information investors are looking for and should provide them. Keeping things ambiguous really doesn't help, I think, anybody. Having said that, we have actually asked all of these questions to the management over the weekend, as in we've sent an email. Sometimes management does get back, within a day or two. And if you do get a response clarifying these things, saying that they have actually set up some additional capacity, or their timelines for the capacity is going to be, say, in the next few months, then that can change how we view this company. And if we do get that response, we'll definitely share it in our, on X in our final reviews. So when I come back to that point on the PE multiple being 9, it could be that their PE multiple for FY24 is 9, FY25 is 9, and FY26 is also 9. So without that clarity, it's difficult to take a punt on this. Share India, just one couple of points I'll make. Share India is a good LM generally, but very recently they had that issue with Archit Newwood where they had to pull out the, that IPO, and there were questions around the PAT margins. And their anchors are just typical Rajasthan Global and LRSD, which are the most normal SME anchors. And they are also quite brutal on anchor open days and selling on anchor open days. So if there is clarity on this company's capacity and their plans and their ability to deliver numbers going forward, this would be a no-brainer. It's a very niche company coming at extremely cheap valuations. But with this lack of information, that is what makes me want to hold and get that information before I either apply or invest. Hopefully we'll get that information. Otherwise, this is a very risky bet. Got it. Thank you so much, Rohit, for covering it in really detail. As you said, we have a few questions from them, which we need some clarity on. That will really help in order to decide कि इस business का क्या sense है. But from the read that we could get, it's still ambiguous, and we'll see how it evolves. At this moment, it just seems too good to be true. I don't I don't have a lot of better answers for this per se than that. Rohit, one question to you: is there any information with respect to who are the clients? Maybe some clients' name, etc. Is there anything which is mentioned along those lines? I don't think there was anything mentioned. I can just check once. I don't recall seeing any specific names though. Got it. Okay. So that was our read of Envirotech. हमने Envirotech cover कर लिए. Just to repeat for everyone who is joining late, we have covered 3 companies for now. These we'll put on our just on this. There is a list of clients on their website which people can see. This is not covered explicitly on in the RHP, but there are very, very good clients if you look at what they cover on their website, like BHEL, Department of Atomic Energy, DRDO, HAL. There are very, very high quality clients, both PSU and, across defense, as well as bunch of international clients also. Got it. Perfect. So that was helpful. That also helps with respect to the quality of clients as well. But having said that, maybe we'll move forward now. आगे चलते हैं. So we'll move to the next issue. Deccan Transcon की बात करेंगे. So again, it's a logistics sort of a company. It provides tank containers. So, and it's a big issue. It's a 65 CR issue. So maybe Yash, do you want to go ahead and talk about Deccan Transcon? Yeah, sure.
So I'll start with Deccan Transco. So the company is primarily engaged into providing tank and containers on lease and logistics supply chains to clients in various sectors. The company is also specialized in carrying these bulk and hazardous liquid chemicals using their tank containers. Uh, they have one very good thing about the company is that they have very strong network among their partners with global coverage. I think they also have a company and a subsidiary and an associate company. They have served more than 100 customers as of July 24, which are associated with them for more than 3 years. Also, last year they served close to 884 customers last year. Most of their business comes from Asia, which is 70 to 75%. 15% comes from Africa, and rest comes from the rest of the other continents. As I said, that they have very strong customer relationship. Almost 40% of their customer have repeated business with their company. Uh, they are expanding. They are using the issue for funding their capital expenditure towards procurement of tank containers and to meet their working capital requirements. I think the issue is fairly priced. The P ratio comes to 2021 post issue, which is fairly priced as compared to its peers, which is again given in the RHPS Lancer Containers and SJ Logistics. I won't compare this business to SJ Logistics as given that SJ is trading at a PE of 40, 41 on TTM basis, because there is too much growth in the business. They're growing at more than 100% compound rate. But as we can see that the revenue declined in FY24. Similarly, Lancer revenue and PAT declined. PAT increased, but revenue declined. So market has so the issue is already priced towards Lancer containers. Uh, One another interesting thing regarding this issue is that they already have close to 330 containers that are owned with them and 2,940 containers which they have leased. They also have 42 agency agreements with agents located in regions like Europe, Asia, Oceania, and South America. There was a major decrease in revenue in FY24, which was due to decline in sea freights. So this shows that whenever these things happens in future, there is risk to the top line of the company. Even though there was increase in fleet volume, there was decline. So this is one of the key risks which we can look for. For FY25, I think the company with the new fleet and the capital expenditure coming in will be able to do close to 15 crores of PAT and is fairly priced at a PE of close to 10 on FY25 basis. So should be good for long term. And again, the LM, so not the LM, but the market makers predicts has a very good reputation in the market. Plus the anchor book, if we can see the anchor book, there is AG Dynamics Fund, which is FII, and one another name which looks interesting to me is Next Orbit Growth Fund, which is I think Ajay Jalan's G's fund, which is a very good investor. And the one which is most hated by investors are Rajasthan Global because they usually sell after 30 days. So yeah, that's my read on the company. ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना होता है बट ठीक है थैंक यू फॉर कवरिंग डेकेन मेरा एक Also, क्वेश्चन है यार one red flag, which was their revenue declined. But if we see the balance sheet of the company, there is so much cash stuck in their trade receivables. So that's a very negative point for me because IPO से पहले ये सब होता है. सो रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है और उसमें भी ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं व्हाट यू आर सेइंग इसमें मैं देख रहा हूँ यार पैट इंक्रीज हुआ है एनी पर्टिकुलर रीजन व्हिच यू कुड फाइंड आउट और द कंपनी हैज गिवन इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाई द पैट हैज increased even when the revenue has declined first. आई थिंक उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कॉस्टिंग था ना, वो जब रेट्स कम हुए तो उनका कॉस्टिंग भी कम हो गया, which the margins have increased for every company in the logistics sector. So that is justified, I think. They should maintain and sustain these margins going ahead. The only thing which concerns me is their cash being stuck in their trade receivables. Almost 2x का difference है from last year. Got it. So this was Deccan Transcon.
डेक्कन ट्रांसकॉन कंपनी की बात करते हैं। मेरा एक और चीज है आपसे यश, डिड यू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंटेनर्स दैट दे ओन इन एनी वे, लाइक उनने क्या दिखाया है प्लांट प्रॉपर्टी एंड मशीनरी वगैरह अपने बुक्स पे, मतलब द टोटल अमाउंट? या लाइक इफ यू हैव सीन और एल्स वी टोटल कैन अमाउंट आई थिंक इट्स क्लोज टू 14 करोड़, एंड वो भी शायद डिक्लाइन हुआ था बाय 4 करोड़। तो FY23 में आई थिंक 18 करोड़ था, एंड FY24 पे 14 करोड़। Got it. And this is a very decent size IPO, right? Like around 65 CR का IPO है, जिसमें से 60 CR फ्रेश इशू है एंड छोटा सा एक 6 CR का यस यस, OFS है। ऑफिसर, प्रमोटर भी करेक्ट थोड़ा सा कैश आउट कर रहे हैं करेक्ट। फ्रॉम व्हाट आई नो। सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू डेक्कन ट्रांसकॉन। डेक्कन ट्रांसकॉन कंपनी की हम बात कर रहे थे। मे बी विद दैट वी विल मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द फिफ्थ कंपनी। जितना इस कंपनी में ओएफएस है, फिफ्थ कंपनी का उतना इश्यू साइज है। सो बहुत ज्यादा बात करने के लिए नहीं है कंपैरेटिवली, बट लेट मी टेक अ punt at talking of, let me take some and talk about Sodhani Academy for Fintech Enablers, सेफ करके कंपनी, इसका आईपीओ आ रहा है। बहुत ही छोटा आईपीओ है, अराउंड 6 सीआर का आईपीओ है, जिसमें इंटरेस्टिंगली 2.25 सीआर का ओएफएस भी है। फ्रेश इशू भी उसमें लगभग 4 करोड़ का ही है। कंपनी जो है वो 4 सीआर रेस करने की 6 सीआर रेस कर रही है एट 22 सीआर वैल्यूएशन। अब मैं बताऊं अगर कंपनी क्या करती है। सो कंपनी बेसिकली प्रोवाइड्स ट्रेनिंग्स, कंसल्टेंसी एंड लर्निंग सर्विसेज टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल लिटरेसी की अलग अलग कोर्सेज करती है कंपनी, एंड अवेयरनेस के बारे में वेबिनार्स लगाती है, और उनसे कंपनी पैसे कमाती है। सो द प्रमोटर ऑफ द कंपनी इज मिस्टर सोडानी, हु इज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। उनकी ट्विटर पे ठीक ठाक फॉलोइंग है। ही हैज लाइक 45K फॉलोअर्स ऑन ट्विटर एंड इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड ही डज सम कोर्सेज। तो इनकी जो टीम है वो लगभग, इनके पास 9 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं और 7 कंसल्टेंट हैं जो कि अलग अलग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे इनने लिख रखा है कि इनकी जो सर्विसेज हैं उनमें वो 2 डे वेबिनार लगाते हैं, 3 डे वेबिनार लगाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज देते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा कैसे बनाना है, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज देते हैं, और उनके बेसिस पे इनका कमाई होती है। सो वेबिनार्स की जो फीस होती है वो पर पार्टिसिपेंट लगभग लगभग 500 से 5,000 रुपए होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है जो 3 महीने से छोटा, वो उसकी फीस लेते हैं ये लगभग 5,000 से 15,000 रुपए। और फिर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होते हैं, उनकी फीस लेते हैं 20 से 75,000 रुपए। और उसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन करते हैं जिसमें वो फीस लेते हैं 2 लाख रुपए टाइप। सो ऐसे करके ये पैसे कमाते हैं। इनके कुछ कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि आप अपना SIP कैसे बढ़ाएं, क्रैश कोर्स फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स जो वो 1,000 रुपए में बेचते हैं, बेसिक कोर्स ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग जो वो 2,000 रुपए में बेचते हैं। ऐसे अलग अलग उनने कोर्स बना रखे हैं जो वो सेल करते हैं और उससे कंपनी जो है वो पैसे कमाती है। अब अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी ने 2022 में 2 करोड़ कमाए थे, 2023 में भी 2 कमाए थे और 24 में अराउंड 3 सीआर कमाए हैं। पहले तक कंपनी का रेवेन्यू कॉस्ट जो था वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए टाइप था। FY22-23 में 1.25 सीआर एंड 1.39 सीआर। FY24 में भी वो अराउंड उतना ही 1.83 सीआर, बट रेवेन्यू बढ़ गया है। सो लॉट ऑफ इट हैज essentially eat into पैट। कंपनी का पैट काफी ज्यादा है, लाइक फॉर द साइज ऑफ इट, विच इज अंडरस्टूड, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, कोर्स ऑलरेडी बने हुए हैं एंड वही कंपनी चला रही है पर से। सो इट्स अ वेरी स्मॉल company. I don't think you should value it at PE or even give it at a lot of weightage. कंपनी जो है वो अपना, उसका खुद का ऑफिस जयपुर में, जयपुर बेस्ड कंपनी है, और कंपनी के प्रमोटर ने ऑफिस को रेंट दिखाया है कि वो ऑफिस की जो अपने घर को ही ऑफिस यूज करते हैं, फिर उसको ही रेंट देते हैं। सो अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ रेंट भी है। सो आई डिडंट फील दिस इज अ public limited company per se, like this has, and again my views are nowhere like I open to everyone having their own point of view. It's just that for me it was too small a company to even think about investing in this company. That is what my view was. The only good thing, the only two things which can work for this company in, according to me, is one, कि साइज बहुत छोटा है, 6 करोड़ का आईपीओ है। सो बहुत ही ज्यादा प्रोन टू मैनिपुलेशन रहते हैं ऐसे आईपीओ, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अगर किसी एक इन्वेस्टर ने बड़ी साइज
इशू ले लिया तो उसके फिर उसके जो शेयर चलने लग जाता है पैसे. सो दैट्स समथिंग विच मे हैपन. एंड ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग इज अ लॉट ऑफ influencer driven companies might look at this as a viable option in the future. क्योंकि आप ऐसा देखो कि कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि just because this person saying they want to go ahead and buy those shares. Similarly, they might, if Sodhani sir has that fan following, तो लोग people might buy just because he's saying so. And कंपनी के सिर्फ 510 लॉट हैं. आई वाज काउंटिंग, देयर आर ओनली 510 लॉट्स बिकॉज दीज ट्रेड इन लॉट्स. सो it's just 510 lots end of the day. So again, but doesn't seem like an investable business to me at all. I would refrain from investing in this, but that is what my read was. Tanmay, Rohit, Yash, do any of you have anything to add on Sodhani Academy, or SAFE as they call it? I think last time when we were counting these lots was how many lots was there was Medi came in and one could see the result. Yes. Although it was a much bigger issue than this one. This is a 6 CR issue. Correct. Manish, just a correction on my end. I Yeah. just checked the property, plant and equipment. For Deccan Transcons, property, plant equipment is 22.5 crores as of FY24. Got it. Perfect. So Thank you so much for with covering. 330 containers owned and 2943 containers that are leased, they are accounting for 22.5 crores of property plant. I think this is mostly accounting for the ones which they have owned. Got it. So ये हमने बात की अभी सोधानी की. अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मेक श्योर टू काइंड ऑफ फॉलो, like put them in the chat box, and take a call basis that. Maybe with that we will move forward to our last issue. एक लास्ट कंपनी की बात करते हैं, पॉपुलर फाउंडेशंस करके कंपनी आ रही है. उसके बाद हम बजाज की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत हाई लेवल बात करेंगे. आई एम स्लाइटली अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट लिस्टिंग स्ट्रेटेजी बिकॉज एवरीवन हैज वेरी डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड्स. सो आईपीओज आई फील, क्योंकि अभी लिस्ट ही नहीं होते हैं, प्लस a lot of us have positions in Bajaj, so it's slightly counterintuitive to talk about it, but we'll try and give our very small flavor. Maybe पॉपुलर फाउंडेशंस की पहले बात करते हैं. 20 CR आईपीओ है, बहुत ही छोटा आईपीओ है. एंड कंपनी जो है वो ईपीसी करती है, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो यश, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट Popular Foundations? Just one thing, we'll put this on YouTube as well. So if you haven't followed us on YouTube, go ahead. The link is in the pinned comment में link है, आप उस पे follow करो. अगर आपने कोई IPO मिस किया है तो आप वहां से भी follow कर सकते हो. So over to you, Yash, to talk about the read of Popular Foundations. Yeah, sure. So first of all, I'd like to highlight to everyone that ये IPO the issue मेरे को पसंद ही नहीं आया है. I don't know what they are. मतलब I know obviously what they're raising for, but I don't think that they should have come with an IPO for this much. So I'll start with कि कंपनी करती क्या है. कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. They offer building services to institution, factories and hospitals. And the companies had almost 86 permanent employees and 500 contractual basis employees. So they are raising funds for prepayment and repayment of their loan and meeting their working capital capital requirements. So ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, ये कंपनी पहले तो बहुत फ्रेगमेंटेड बिजनेस में है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है इनका. प्लस इनका रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट अप टू द मार्क. आई थिंक FY23 से FY24 10% खाली रेवेन्यू बढ़ा है एंड नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड क्लोज टू 3 to 4 times. एंड मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है काफी ज्यादा इनका. आई थिंक 2.3% से 6 point समथिंग अप्रॉक्स 6.5% पे नेट प्रॉफिट मार्जिन आया है इनका. बट ये सब ठीक है कि नेट प्रॉफिट बढ़ गया, रेवेन्यू थोड़ा कम बढ़ा, बट कैश फ्लो इज टोटली मेस्ड अप. कैश जनरेट ही नहीं कर पा रहा है बिजनेस. ट्रेड रिसीवेबल्स में इतना पैसा अटका हुआ है. कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी को ही अपने नाम की प्रॉपर्टी वापसी रेंट आउट कर रखी है, जिससे 2.5 lakhs पर मंथ का इनकम कंपनी के ओनर को जा रहा है. और क्लोज टू आई थिंक they have how much experience? I think more than 25 years of experience they have. फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन अभी तक 75 करोड़ ही है. तो I think the promoters are not focusing much into the business. So I think this should
बी अवॉइडेबल एज पर मी, मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है ऐसा। I feel we have a second Tanmay in the form of Yash. Yash is also going full direct here, which is good. But yeah, thank you so much for covering popular foundations. So thank you so much for your read, Yash. Let us know, guys, how did you find our read? What did you think of it? He said that maybe we can go ahead and talk about what everyone's waiting for, which is essentially Bajaj listing strategy. Maybe Tanmay, I understand a lot of those comments are what is Tanmay planning to do. So maybe do you want to go ahead and talk about Bajaj listing strategy, what you are planning to do? Try and keep slightly away from numbers if possible. Like don't give direct ranges, but up to you. सर मतलब ना ऑनेस्टली सर कंपनी बहुत अच्छी है बट जो लेवल का प्रीमियम और ओवर ऑप्टिमिज्म चल रहा है ना तो मतलब आई एम लाइक यार इट्स डबल तक ठीक है उसके ऊपर नहीं दिखता मुझे मतलब ठीक है और ऊपर आए तो इसका टाटा टेक 2.0 हो जाएगा तो मतलब माय स्ट्रेटेजी ऑन दिस विल बी जो 3 से 5 साल के लिए रखना चाहते हैं उन्होंने ही होल्ड करना चाहिए बाकी एक लेवल देता हूँ मैं एनी लेवल अबव 125 फॉर मी इज 50 to 70% प्रॉफिट बुकिंग एंड इफ इट लिस्ट लाइक एज पर प्रीमियम मैं तो 100% लेके निकल जाऊंगा मतलब या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी रखूंगा तो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर मी एट दिस प्रीमियम्स तो बन नहीं रहा है मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर और सोचो कि एज पर प्रीमियम लिस्ट हो गया तो उसका मार्केट कैप रहेगा 1.3 लाख करोड़ इसका प्राइस टू बुक बनेगा आई थिंक अराउंड 8 8 9 9.5 का प्राइस टू बुक बनेगा क्योंकि क्या होता है नया इक्विटी ऐड होगा तो इसका जो आपका बुक वैल्यू नीचे जाएगा ड्यू टू हायर डिनोमिनेटर तो अराउंड 9 10 के बुक वैल्यू पे और इसका पीयर कंपेटिटर ट्रेड कर रहा है ढाई पे 2.5 मतलब आई नो कि ब्रांड प्रीमियम है नंबर 1 कंपनी है फास्टेस्ट ग्रोइंग है बट ढाई की चीज आप 5 में खरीदोगे ढाई की चीज 10 में तो नहीं खरीदोगे ना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर हो रहा है और मतलब ठीक है अच्छी कंपनी है बट एक होता है ना सर कि सोने को सोने का भाव मिलना चाहिए सोना हीरे में नहीं बिकना चाहिए तो वैसी चीज हो रही है Got it. I also will probably do same, although I wasn't very lucky, so I don't have a lot of Bajaj to start with. काफी कम है मेरे पास, so maybe I will sell it if I get a decent enough rate and say good riddance. But that was what I was planning to do. Rohit, yes, do you guys have anything to add, or we can probably wrap up the space? Very similar view to Tanmay. I also feel that if this lists as per hype, it will do what Tata Tech did. And I also just have some shareholder quota allotments. I think, I know people, you look at housing finance as a separate category, but another way to look at this company is look at what its parent trades at. Its parent trades at 6.2 price to book. So for me personally, that is my threshold. Beyond that, you're anyway going into blue sky. There is no housing finance. There's no NBFC of any kind that trades at 7, 8, 9 price to book. Bajaj Finance has phenomenal growth and asset quality and all of those things. So why should suddenly Bajaj Housing get a 7 price to book or an 8 price to book? I cannot understand that. So for me, my threshold also is the Bajaj Finance threshold, which is obviously a very high quality franchise and the parent of this company. So I personally will also be booking beyond a point because I don't even have enough quantity for it to make sense for me to hold for a very long term. And I cannot buy if it lists at more than 100% honestly at those prices. So I will just book my lots. I'll do some clarification. See, I have received a reasonable allotment, not very high, but I have received. I haven't shorted it in gray, so people might think that I have shorted, so I'm giving a negative review. That's not the case, okay? So I have received the quantity, but I don't like to be a rational person. My mind goes beyond that value, doesn't go beyond that valuation limits. This is one of the reasons why we don't do a lot of listing strategies. IPO में क्या रहता है कि हम पे होते ही नहीं IPO, so it's just a lot more cleaner way to do it. But yeah, that was with respect to our view. Just want to highlight कि हमने आज 6 कंपनियां कवर की हैं. We spoke about Western Carriers, Arcade, Envirotech, Deccan Transcon, Popular Foundations and Sodhani Academy. इन सभी 6 ही कंपनियों के बारे में हमने आज बात किया और इसके अलावा 5 और कंपनियां हैं जिनको हमें कवर करना है उनके बारे में हम कल बात करेंगे. So Northern Arc is one company which seems very good. We'll talk about it tomorrow. And then there are 4 different
SMEs that we have to talk about. We'll talk about Ocel devices. We'll talk about Pilatro. We'll talk about Paramount Specialty Forging and Byco. All of them we'll do in the tomorrow evening space. So make sure कि आप ये space कल भी join करें रात को 9 बजे. Also follow Tanmay, Rohit, Yash and me. We'll continue to post our unbiased reviews as much as we can, and also follow the YouTube channel. Thank you so much guys for joining, but that's pretty much it from our side for today. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone.